Hi on books, and today we are going to talk about Harry Potter and the Cursed Child. I love the Harry Potter series. It's because of this love that I am a bibliophile today. And not just a bibliophile. I must say, अगर आज मैं एक better इंसान हूँ, तो a lot of credit goes to this story. क्योंकि इस कहानी से मैंने बहुत से valuable lessons सीखे हैं. जैसे how to stand up when you don't have any courage to, how to let go when it's not easy, how to choose right over what's easy, how to be open and acceptable towards people who are different than us. And most important of all, how to fight the darkness within. अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूं, so it will take me multiple videos to explain how much I learned from this series and how much I love it. And this love is the very reason that I hate the play Harry Potter and the Cursed Child. When I finished reading the 7 books and watching 8 movies of the Harry Potter series, I wanted more of it. I wanted to spend more time with the legendary trio. But J.K. Rowling said she is not going back to the story और कहानी ख़त्म हो चुकी है. ये न्यूज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था. सो इन ऑर्डर टू फिल द वॉइड दैट द सीरीज लेफ्ट ऑन कम्प्लीशन, आई केप्ट गोइंग बैक टू द बुक्स अगैन एंड अगैन. इतना ज़्यादा कि हैरी पॉटर की 7 बुक्स पढ़ना अब मेरा ईयरली रिचुअल बन गया है. आई बैडली वॉन्टेड अनदर स्टोरी फ्रॉम द यूनिवर्स. बट जब फाइनली मेरी ये दुआ पूरी हुई तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था. आई वॉज पिस्ड ऑफ टू द कोर बिकॉज द विश केम इन द फॉर्म ऑफ द कर्स्ड चाइल्ड. एंड आई वॉज लाइक, इससे बेहतर तो वॉइड था. बिकॉज दिस पीस ऑफ वर्क वॉज बैड. जिन रीजन्स की वजह से आई लव्ड हैरी पॉटर, ये बुक उन सारे रीजन्स को डिसरिगार्ड करती है. फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लास्ट टाइम की तरह इस बार भी वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सो जो पहला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे कि वाई दिस बुक इज़ अ फैन फिक्शन. सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे उन प्लॉट होल्स के बारे में जो कैनन के खिलाफ जाते हैं. थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे इस बुक में कैरेक्टर्स का डाइग्रेशन हुआ है. और जो फोर्थ पार्ट है वो बेसिकली कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे. So, with this being said, let's start the video. Why Harry Potter and the Cursed Child is garbage and not canon. It's a fan fiction. J.K. Rowling did not write the Cursed Child. It was written by Jack Thorne. And as it was not written by the original author, you could feel कि जो original 7 बुक है और इस बुक के राइटिंग स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सिर्फ चीज़ों के नाम सेम है, बाकी कुछ भी नहीं. It feels like you've been given the same body but with a different soul. You'll find this book to be inconsistent and contradictory to the original 7. It's just set in Harry Potter universe with a different author, जिसकी वजह से आप बहुत strongly feel करोगे कि शायद आप एक fan fiction पढ़ रहे हो. That too, a badly written fan fiction. The funny thing is, there are countless fan fiction on Harry Potter, and many of them are far better than Cursed Child. Plot holes. पहले बात करते हैं टाइम टर्नर के बारे में. इट वॉज सेट कि 5th बुक के एंड में ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक सारे टाइम टर्नर डिस्ट्रॉय हो गए थे. एंड देन इन कर्स्ड चाइल्ड यू कन्वीनियंटली शो मैलफॉय हैविंग वन. बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि टाइम टर्नर ऑल टुगेदर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन कर्स्ड चाइल्ड देन दे हैड इन प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान. टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, लेट अस कंसीडर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स. सपोज एक इंसान है जिसने टाइम मशीन बनाई. वो पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देता है. जब वो अपने ग्रैंडफादर को मार देता है सो वो कभी पैदा ही नहीं होता. और वो जब पैदा नहीं होता तो वो टाइम मशीन नहीं बना पाता और कभी अपने ग्रैंडफादर को मार नहीं पाता. दिस इज़ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स. और यही पैराडॉक्स है जिसमें कर्स्ड चाइल्ड फंस जाती है. अगर एल्बस ने अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट की जिसमें हैरी इज़ डेड, तो एल्बस कभी पैदा ही नहीं हुआ. और अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो टाइमलाइन शुड नेवर हैव बीन ऑल्टर्ड. प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान ने इस इशू को काफ़ी क्लेवरली टैकल किया था. 3rd बुक ने इस बात को बहुत क्लियरली बताया है कि पास्ट कैन नेवर बी चेंज्ड. इवन इफ़ यू यूज़ टाइम टर्नर तो तुम पास्ट में जाके वही काम करोगे जो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ ने पहले ही कर चुका है. देयर वॉज नो अल्टरनेट यूनिवर्स. नेक्स्ट वी हैव द मेज प्रॉब्लम. एल्बस, स्कॉर्पियस और डेल्फी तीनों ट्राइवेजर टूर्नामेंट की मेज में प्रेजेंट रहते हैं. एंड वी नो फ्रॉम द 4th बुक गॉबलेट ऑफ फायर कि बार्टी क्राउच जूनियर ए.के.ए. फेक एलिस्टर मूडी पूरी मेज के ऊपर कॉन्स्टेंटली नज़र रखे हुए था. बट इवन देन ही डिड नॉट सी दीज 3. That just doesn't make sense. Then we have Polyjuice Potion. In the 2nd book, Chamber of Secrets, Polyjuice Potion बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल और 1 महीने का टाइम लगता है. बट इन Cursed Child, एल्बस जो पोशन बनाने में बहुत ख़राब है, ना सिर्फ ईजिली पोशन बना लेता है बट उसे 1 महीना भी नहीं लगता. Yep, they completely overlooked it. Voldemort having a child. Voldemort having a child is an idea that many Potterheads find difficult to digest. For one, it's out of character for him, and second, it makes one wonder, is it even possible for him to produce an heir after the massive transformation he underwent? I mean, he was barely human.
बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स कंसीडर ही हैड वन। पर क्वेश्चन ये है कि डेल्फी पैदा कब हुई और किसी ने बेलेट्रिक्स को प्रेग्नेंट क्यों नहीं देखा? एंड आफ्टर हर बर्थ हु रेज्ड हर इन सेक्रेसी? देयर आर नो आंसर्स टू ऑल दिस इन द बुक। Snape being alive. In the alternate timeline of Cursed Child, Snape was alive and he was part of resistance against Voldemort. But in the final book, it is written that Snape was killed by Voldemort because he believed Snape Aldemont का असली मालिक बन गया है और जब तक Snape जिंदा है he cannot be the true master of Aldemont. अगर Voldemort Battle of Hogwarts जीत भी जाता तो वो तब भी प्रोफेसर Snape को जिंदा नहीं छोड़ता. So yeah, Snape being alive in the alternate universe just doesn't make sense and it's a glaring plot hole. और ये तो सिर्फ कुछ प्लॉट होल्स है जो इस वीडियो में मेंशन किए गए हैं. If you'll dive into the topic, you'll find endless videos, articles, blogs from Potterheads that will point out more of these, which is very frustrating because this was supposed to be a fan service and this book is everything but that. But this is not even the real reason why people hate this book. The real reason is butchering of characters, and it brings us to the next part of the video. Many people grew up with these characters, so the attachment with them is real. And जब हमने ये देखा कि Cursed Child में किस तरह इन characters को butcher किया गया है, it just broke our hearts. Let's talk about Ron first. Ron को Cursed Child में काफ़ी बेवकूफ़ दिखाया गया है, and he is reduced to comic relief. And this is the crime that even the movies are guilty of. If you have read the books, तुम ये बात जानते होंगे, Ron कभी बेवकूफ़ नहीं था. In fact, he was very smart. But Ron की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे वीजलीज की लेगेसी का भार उठाना था. उसके भाई बिल और पर्सी हॉगवर्ट्स के हेड बॉयज थे. चार्ली क्विडिच टीम का कैप्टन था एंड फ्रेड एंड जॉर्ज ट्रबलसम होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और लाइकेबल थे. सो जब रॉन फाइनली हॉगवर्ट्स आता है तो उस पर ऑलरेडी अपने भाइयों जितना अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है. बट अगर वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करता भी तो इट वॉज ओवरशैडोड बाय हैरी. एंड फिफ्थ बुक द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में हैरी ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया है. जब रॉन को डम्बलडोर ने प्रीफेक्ट बनाया, हैरी फेल्ट बैड एंड जेलस. हैरी को लगा दैट ही डिजर्व्स टू बी द प्रीफेक्ट नॉट रॉन, लेकिन उसे थोड़ी ही देर में रियलाइज़ होता है कि वो गलत सोच रहा है और उसे रॉन से वो स्पॉटलाइट छीनने का कोई हक नहीं है जो वो डिज़र्व करता है, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट एंड ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड अगैन. बट लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं. कर्स्ड चाइल्ड में इन सारी बातों को दरकिनार करके रॉन को भोंदू दिखाया गया है. आई मीन सीरियसली, वो रॉन जो खुद को फर्स्ट पार्ट में सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था व्हेन ही वाज जस्ट 11, who flew a goddamn vanishing car to Hogwarts, who literally found and destroyed 2 Horcruxes. वो रॉन तुम्हारी कहानी में भूंदू और बेवकूफ़ है. This is not the Ron that I knew from the original 7 books. Next we have Hermione. Hermione, who had the reputation of being the brightest witch of her age, the girl who was the very definition of brilliance, practicality and thoughtfulness, grew bitter just because she didn't get to marry Ron. I mean seriously, जो Hermione को हम जानते थे वो इतनी ज़्यादा shallow और vain नहीं थी. She was a lady of cause and she never let emotions cloud her judgment. And in the book, Hermione was made into the female version of Snape. Why would you do that? And finally, we have the boy who lived. हैरी को इस कहानी में एक ख़राब स्टूडेंट, एक ख़राब फादर और एक ख़राब इंसान बताया गया है. In the original story, one of the main reasons why Harry was good to others was he knew how it felt to be treated badly. Being an orphan और abusive guardians होने की वजह से Harry always longed for love, especially parental love. वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि पेरेंट्स का ना होना या बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करना उन पर क्या असर छोड़ता है. लास्ट बुक डेथली हैलोज के एपिलॉग में जो कन्वर्सेशन हैरी और एल्बस के बीच में होती है वो ये बात बताती है कि हैरी इज़ अ गुड फादर. वो कभी भी अपने बच्चों को अपने शूज़ में उतरने के लिए नहीं कहेगा. उसके लिए उनके अचीवमेंट या फेलियर से ज़्यादा उनकी खुशी और वेलबींग ज़रूरी है. दिस इज़ वॉट एपिलॉग शोज अस. बट कर्स्ड चाइल्ड जो इसी एपिलॉग से शुरू होती है वो इस बात को बहुत जल्दी भूल जाती है. एंड एट वन पॉइंट हैरी एल्बस को कहता है कि आई विश यू वर नॉट माई सन, द सेम एल्बस हु गॉट लिलीज आइज. और सिर्फ इतना ही नहीं, हैरी गोज आउट ऑफ हिज वे एंड थ्रेटन्ड प्रोफेसर मैकगोनागल विद मिनिस्ट्री जस्ट बिकॉज शी रिफ्यूज टू कीप एन आई ऑन एल्बस. दिस इज द सेम मैकगोनागल whom Harry used to respect. And if this wasn't enough, Harry in the Cursed Child wanted Scorpius to stay away from Albus. He wanted to take away the only friend Albus had because of the rumors surrounding Scorpius. हैरी, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके फ्रेंड्स किस बैकग्राउंड से आते हैं या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो उनसे दोस्ती रखता था बिकॉज ही न्यू व्हाट फ्रेंडशिप मेंट. इस सेम चीज़ को हैरी इस बुक में बिल्कुल भूल जाता है एंड ट्राइज टू सेपरेट एल्बस एंड स्कॉर्पियस बिकॉज पीपल से स्कॉर्पियस इज वोल्डेमॉर्ट्स चाइल्ड. व्हेन वाज हैरी दिस मीन इन द बुक्स? There are many reasons to hate on this play.
But the main reason is the lack of effort on J.K. Rowling's side to make it sound and loyal to the original material. She shouldn't let someone ruin these characters like this. These characters helped me and people like me in difficult and depressing times. It's from them that we have learned the value of friendship, compassion, sacrifice, love, bravery, acceptance, and so on. I've loved Harry and friends with my whole heart, and I'll love them forever. Always. While it makes my heart wrench with pain that Harry's journey is over, my love for him is far from over. The cursed child tries desperately to bank on nostalgia, but it's so bad that even the nostalgia can't save it. And this brings us to the end of the video. Do share your thoughts in the comment section. If you enjoyed the video, make sure you like it and help this book nerd grow by sharing the video and subscribing the channel. And do follow me on Instagram for more bookish content. I'll see you next time in my next video. Until then, my fellow book nerds, keep reading.